we have a panel discussion on the topic of the decoding the NAP 2020 for the higher studies. For this panel discussion, we have a moderator, our Dean Sir, Dr. Aman Jhaji. I request to Dr. Jha, please open the panel discussion. Make the way to carry on this NEP 2020 successfully. So may I request Director TIAS, Dr. Ajay Kumar sir, to kindly carry on, please. Thank you. As far as the new education policy is concerned, it's been divided into three frameworks. That is, one is with higher education, second is the school education, third one is the vocational education. Three ramifications are there in new education policy. Before proceeding on why new education policy, anything when we talk about the liberalization, privatization, globalization, at that time, India is facing problem of the crunch, resource crunch. So at that time, LPG came for the advantage. Now we are saying that our students, when they are going for international system, they want to have equivalence. So somewhere or the other, our degrees are lacking. They have put in over there, being a signatory of Washington Accord. India is a signatory of Washington Accord, and they have to upgrade their education system. So does the new education policy came into existence. This is the main frame behind it. Because anything in education system means learning outcome-based education. This NEP envisaged two things. Outcome-based education, हम पढ़ क्यों रहे हैं बच्चे, पढ़ा क्यों रहे हैं? What is the basis for that? So first thing which has been put forwarded by the new education policy is the outcome-based education. Then they have taken transformation of certain things. They have taken up Bloom's taxonomy. New revised Bloom's taxonomy 2001, they have taken up. We are asking through the mentees questions where, why, how. There is no ramifications, creation missing, evaluation missing. So they talk of higher level of learnings. Means if you are saying you are higher education institutions, so what is your higher level of learning? So what is expected of a learner over here? Creation. That part is missing in previous things. Here, after new education policy comes into picture, that means we have to create this. If my subject is this, what is my creation? So you all learner with mentor and mentee, when we talk about those things, they have talk about in the sense that we have to create something. When we learn something, then we have to, it's a changeover from the faculty-centered, teacher-centric system to the learner-centric system. Focus has now changed. Earlier we are having regulators, now they are facilitators. Marks change. We are going to help you off. We are not your boss. We are going to learn from you. You are going to learn from us. It's going to be a mixed breed kind of thing. We are not your boss. Sometimes, every time, it has been shown that every generation is being able to give its new color. So does you. Every generation is advanced over the previous generation. So I feel you are better equipped than us. Fourth aspect is the evaluation. When we talk about evaluation, where this system envisages, we have to bring in rubrics into system. What is rubrics? We are not going to give you pass or fail. No fail. Proficiency comes in between. You are proficient in this area. For every proficiency indicator, there are certain indicators. If you say this is the proficiency level, then this must be the indicators. So every subject has got proficiency and indicators. In all, if our graduates pass out from the school or from the university, these are the graduate attributes which everybody must have. Just like a product from any of the company comes out, you talk about these are the features. So does we. If you are a graduate from GGSIP University, as a graduate, 12 attributes, they clearly define 12 attributes should be there in you. So what are these 12 attributes we're talking about? 12 out of 6 is from the syllabi based. Your syllabi based system will be giving you 12 attributes and 6 attributes from the syllabi area, and the 6 attributes has been made through the new education policy which has been there. And mind you, this values and ethics is omnipotent. Means it is from the side of the NEP that
every course, every program must have in their subject, in a program, the value system. What are the 3 to 4 value system they have added? Everybody will be having a language, means language, his own language, English, Hindi, and vernacular language. If they are from Punjab side, the Punjabi. If they are from Maharashtrian side, they're Maharashtrian. So Maharashtrian. These are the language they have to work it off. The first part is the language communication. Second part you can talk about that human ethics and values, human value system. Third part is the ITC, use of ICT tools, information communication technology. You must have to be conversant with these two. And fourth, lifelong learning. You have to be a lifelong learner. Everybody who's a student now, they have to work on as a lifelong learner. Our learning is never going to stop. So we have to make our system in that order. There is going to several entry points, several exit point to make it convenient for the learner. जिस टाइम में इसको जरूरत हो वो किसी भी प्रोग्राम को ज्वाइन कर सके, पढ़ सके, लर्न कर सके और एक सिटीजन देश के लिए अच्छा बन सके. तो ये 4-5 पॉइंट्स हैं जो कि आपका न्यू एजुकेशन पॉलिसी पुटअप करती है. उसमें से वैल्यू सिस्टम्स की हम जो बात करते हैं वो हमने आज का टॉपिक आपका रखा है. बाकी जो 4 आइटम्स हैं, 6 आइटम्स हैं, वो स्पेशलाइज्ड डोमेन रेलेवेंट हैं. हम लोग जो जिसकी हम बात करते हैं, देयर आर 6 लेवल्स ऑफ डोमेन एज फार एज द Bloom's taxonomy is concerned. Higher level of the Bloom's taxonomy talks about the evaluation and the creation. This part is missing previously because there are 2 examinations which we used to conduct. हम लोग जो एग्जामिनेशंस आपसे लेते हैं उसमें 2 एग्जामिनेशंस हैं. वन इज़ योर इंटरनल, एक्सटर्नल, 2 थिंग है. लेकिन जो हायर एजुकेशन के जो लर्निंग है उसमें उसके लिए आपको इंटर्नशिप वगैरह करवानी पड़ती है. तो ये चीज़ें अब नई आई हैं इसके अंदर आपको वर्क ऑफ करना है. आई थिंक सो आई हैव गिवन यू स्केच ऑफ दैट इन शॉर्ट 4 minutes. I have made my point over here very, very clear to all the audience for that. Thank you. Thank you very much. You have covered wide range of scopes. In fact, all these things we are doing over here in Tecnia now. We have started to do it. We feel fortunate to start all these things. Basically, you discuss on the HOTS and LOTS, high order thinking and low order thinking. And low order thinking is how, in the many ways, earlier also it was a part of the syllabi, and we all were doing. But so far, we need to augment, we need to make this student infuse all this idea on the high order thinking. Almost half of the application and half of the analyzing, full of the evaluation and full of the creation. So for that, it has been seen in the NEP 2020 also that the more and more practical courses, skill-oriented courses have been recommended for the students so that they could have more and more the expertise on the high order thinking or high order skills. That's a great. May I now request Durgesh Tripathi sir to throw light on it. Thank you. First of all, I would like to focus and to mention some of the important points related with the NEP 2020 in purview or in the accordance with the international regulatory authorities. As we know that United Nations has already been implemented and mentioned the UN SDG 4 quality education, in which you may found that quality education means education to everyone, no gender discrimination to education or in education, quality education to all, and the reach, access and engagement of quality education to all. And I feel fortunate to share with you all that you have already been engaged with the digital education or a inclusion of digital education in higher education institutions, as you have already adopted some of the MOOCs courses to sensitize and to understand the accordance and acknowledgement of the digital education in higher education institutions in our country. As we know that if we look forward to reach and access and to engage
every scholar, learners of our country, we don't have any other option to connect and to engage with and on the platform of the digital education or a digital platform or a virtual platform. As we have already seen in pandemic, in the last COVID-19 situation, as a teacher, as a learner, as a scholar, we don't have any other option to connect and to engage to all of you, to all the stakeholders of our society, other than the virtual platform. And as we know that in our country, India has very distinct kind of a geopolitical and geoclimatic situation in our country. We cannot compare the reach, access and engagement of education and quality education to all the stakeholders of every part of our country, to every socio-economic conditions of our country, so that it's our duty as a national mission on education through ICT, duly implemented in 2015 by Government of India, University Grants Commission. And I feel fortunate to share with you all that I am associated with National Mission on Education through ICT since 2015 as the EPG Pathshala project. Later on, in 2018, I have associated and I have developed a MOOCs course, massive open online course, which can be easily available on the virtual platform, so that every student, every learner of our country, as well as every student, anyone can be able to reach and access and to engage my course on MOOCs or in Swayam platform, which is already been adopted and sponsored and selected and offered by Ministry of Education, Government of India. So that it's very easy to engage every strata of our society, every part of our society. There is no restrictions for the gender, for a prominence to male student or to differ with the female student, or there is no constraint for socio-economic conditions as well. Every student, any of the student can be able to access and reach and to engage and to upgrade our knowledge, upgrade their skills that have already been mentioned by Dr. Ajay Kumarji and Dr. Jha sir. You can be able to upgrade your skill. You can be able to take insights with the national academicians as well as the international professors. International academic institutions like Oxford University, Harvard, London School of Economics, or any of the university from the globe. It's very easy to reach and access and to engage, to upgrade your knowledge, to upgrade your understanding and insights, and to upgrade and to acquire new skill for the optimum goal that can be defined with the final destination for your life, to achieve your goal for a future endeavor, for a future academic understanding. Only one thing I would like to say, please acknowledge, include the digital education in day-to-day life, so that you can be able to access, you can be excel your potential of knowledge for the upgradation and to take insights with the international parameters and to establish the Vishwaguru or a knowledge economy of our country. Only I would like to say some of the key aspects related with the new education policy 2020, which has already been included the international parameters to empower our society, to empower our scholars, to empower our learners. Thank you so much. Thank you, Dr. Durgastapasi, sir. I still remember 2.5 years back when I had a brief discussion with Durgesh sir. At that time, everything was online and digital. So people were thinking that when this phase will over, we will revert everything back on the offline mode. But he was very sure, okay, well, 25 to 30% courses might be in the form of digital and the MOOC. And he is right. That's a great, he predicted at that time, and we are having the new syllabi of various programs, and their
the great presence of the MOOC course, either 6th grade or 3 credits in various semesters that have already been incorporated. So whatever we were expecting through Durgesh sir is right, and as he is National MOOC Coordinator for GGS IPU chapter. So this is great for us that he is with us, and this is a very important part of the new education policy as well. It plays very, very important role. Quality education depends also upon the quality teacher and quality input, and there is a sky limit. You can search, you can go on the digital and MOOC courses and find the quality teacher, quality input, quality deliverance, quality examples through the resource persons from the IIMs, IIT, and various others, the A-grade institutions, even abroad too. That's great, Durgesh sir. You are doing great on behalf मैं of the एक entire चीज और faculty. बोलूंगा इसमें, Yes, please. बल्कि ये बहुत सम्मान का विषय है आपके इंस्टीट्यूशन के लिए कि मैंने बहुत पहले जब एडॉप्ट होने की बात होती थी कि मूक्स को अपने पेडागोजी में एक्नॉलेज करना पड़ेगा अप टू 20% और अप टू 40%, तो मुझे याद है आज भी कि मैं डॉक्टर अजय कुमार जी से, डॉक्टर झा सर से मैंने ये बात कही थी कि आने वाले समय में इसको आप डिनाई नहीं कर पाएंगे, इसको एक्नॉलेज करना ही पड़ेगा। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप जितनी जल्दी आप अपने स्टूडेंट्स को, फैकल्टीज़ को सेंसिटाइज करिए, कैपेसिटी बिल्डिंग करिए, मैंने ये वर्ड यूज किया था, उतना आप लीड करेंगे। और मैं इस बात के लिए बधाई देना चाहता हूँ और धन्यवाद देना चाहता हूँ कि टेक्निया इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज़ के जो एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं, जो फैकल्टी हैं, आप सब लोगों ने इसको एडॉप्ट किया, एक्नॉलेज किया और स्टूडेंट्स को भी शेयर किया कि कम से कम आप इन चीज़ों को जानिए तो, क्योंकि आने वाले समय में ब्लेंडेड टीचिंग, ब्लेंडेड लर्निंग का ही ज़माना है और इसको आप जितनी जल्दी अडॉप्ट करेंगे उतनी जल्दी आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। Great. Thanks, sir. And this opportunity for me to advise you all to be register yourself in one or other MOOC courses immediately. This is the future, and it will certainly enhance your benchmark. Thanks, Durgesh sir. Thank you very much. May I now request Professor Dr. Sanjay Singh Baghel sir to throw light on it. Sir, please. First is skill-based education. And he clearly said, till now, whatever the actually knowledge we are disseminating, it was not skill-based education. It was conceptual or theoretical-based knowledge. With example, if I am going to explain, during my US visit, I asked in New York University one professor, sir, what is the difference between Indian education system and US education system? The professor told me, the Indian education system is the best in the world. He's talking about one professor of the Columbia University. And asked curiously, sir, how can you explain the same? He told, see, Indian education system is totally concept-based education system. They know the formula how to build a building. But American education system, applied-based education system. They don't know formula. If you give them a structure, they might be build the building, but how a building going to be built, they don't know. So in that way, Indian education system is best because whatever we are teaching is totally concept-based education system. The only irony is that whatever we are teaching, we don't have sufficient labs, experimental platforms where we can apply our knowledge and concept in ground zero. So in this NEP, actually right now they are providing concept as well as skill or applied based education in this NEP 2020. Second important thing is NEP is value based education, what I was talking during my lecture. Till now, we are giving only a roughly knowledge about different subjects. We are not sharing whatever our culture, whatever our sanskara, whatever our morals in society. Like I was talking about vidya dadati vinayam. विद्या से विनय प्राप्त होता है,
विनय से योग्यता आती है, योग्यता से एक ऐसा संस्कार आता है कि जिसके माध्यम से आप सफल हो सकते हैं. आई वॉज टॉकिंग अबाउट इंटरव्यू बोर्ड. इंटरव्यू बोर्ड में बहुत सारा बच्चे से जब हम पूछते हैं कि आप ये सवाल का उत्तर दीजिए, कई बार तो होता है कि पूरे के पूरे आंसर होते हैं, बट द पर्सनालिटी somewhere is not fit for the particular position. So these human values, moral values came from value education system, whatever right now the NEP introduced in 2020. Second. Third is language is compulsory and mandatory till the class 6. What actually when we were studying during the school till the 6th class we have studied in Hindi medium school. English हम लोग 7वीं से पढ़ते थे. तो again we have returned back in the same platform. Right now the NEP introduced 3 language formula. Suppose you are Tamil, like Ajay sir was telling, or Punjabis. So first your mother tongue is Tamil or Punjabi. Second is medium is compulsory or mandatory, like Navodaya Vidyalaya is teaching right all across the India, is Hindi. Afterwards you can opt English, whatever your third language. And why NEP introduced this language formula, 3 language formula? Because if you are going to see the across the globe, whoever the famous personalities, whether it is in science, whether it is in literature, whether in philosophy, you will find everybody is perfectly able to express their knowledge and disseminate their knowledge their own mother tongue only. For example, when even Rashtrapita Mahatma Gandhi ji is barrister, studied in London, but when he is going to write experiment with truth, in which language they have written? In Gujarati. Our first Nobel laureate in literature, Rabindranath Tagore, when he has write Gitanjali, it is in Bengali, their own mother tongue. The famous writer, alchemist Paulo Coelho, you might be heard the name. His writing, his novel is Spanish. Laterly, it is translated in English. Even जो Millennium Star Amitabh Bachchan father, Harivansh Rai Bachchan ji, he has completed his PhD in English literature in W.B. Yeats. He is English literature's master. He was professor. He was officer in the External Affairs Ministry in India. A London returned English literature professor, when he is going to write their own thought, philosophy, a poem, in which language he choose? The mother tongue, Hindi language, Madhusala. मदिरालय जाने को घर से चला है पीने वाला, किस पथ से जाऊं असमंजस में है भोला भाला, अलग अलग पथ बतलाते सब, पर मैं यह पथ बतलाता हूं, एक राह तू पकड़ चला चल पा जाएगा मधुशाला. You can never explain the same thing in English because English is not your mother tongue. So first is skill based, second is value based, third is language based, and fourth most important thing is NEP is credit transfer. Till now our education system run only 10 plus 2 plus 3. 10 के बाद 2 साल 12th का होगा, उसके बाद 3 साल ग्रेजुएशन का होगा. When you have completed your graduation in India and suppose you want to take admission in USA, UK, Australia, anywhere in any other European country, first you have to complete 1 year more in USA or UK because their education, I was teaching USA and Middle East, their education system in 4 years. So our Indian students, when they are going to transfer there and want to take admission in PG in USA, they must complete 1 year more diploma, then only they can take admission in
PG courses. So right now, what the NEP is telling, after completion of certain period of the credit points, once you complete that credit, the credit will be transferred, and where you are leaving your study, suppose you complete your 1 year, you will get certificate course. And afterwards you are busy with because of some family problem, other issues. Again after 2 years you will complete the same, you will get diploma. After 2 years the sabbatical, third year you again going to complete, then you will degree of the BA program or BCom honors, whatever it is. No, BA program, BA pass actually, graduation pass course. And after 4 years of the course, you will complete, you will get BA or BCom or BSc honors degree. So directly you can get admission in any other countries where you want to pursue your further higher studies. This is very actually useful for the Indian students who are willing and dreaming to take admission out abroad. So these four points of the NAP introduce, and if you are going to understand, and this rightly like I was telling you, the concept base, when I was talking about the professor of the Columbia University, my question was why Indian education system is best in the world. So he rightly explained one thing, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा. वो बोला कि just look who is the topmost company of USA, who is leading. Sundar Pichai, Google from India. Microsoft, Satya Nadella from India. That Citibank, some Vikram Pandit. Then Adobe, Gupta ji. Then Harvard University, top 3 subject professor, economics Amartya Sen, philosophy again some Bhagwati, and one more professor, he explained the name, I think, I forget the name. Again, sir was telling Coke also, Indra Nui. तो हमने पूछा ऐसा क्यों सर? तो उन्होंने सीधा बोला कि whatever the conceptual knowledge they are providing is the best, a part of the globe, but only leg where India is behind, the Indian same student is not able to perform in India because Indian government is not able to provide the particular platform, apply the knowledge and enhance the knowledge in the field. तो यदि हम ऐसा कर लेते हैं तो मुझे लगता है इंडिया का फ्यूचर बेटर होगा. And I think, I assure you, NEP is trying to fulfill all this actually laxity what we are feeling here. Thank you very much. That's nice. May I now request Director Sir to go for the second round to churn it out further to make it more and more clarity. The topic is very apt. Once you are going for discussions, the narration, other person is also building on certain points. So, and you as a reader will be also reading certain points. So I would like to give you a thought process, what is going to, how the things is going to affect you and what you are supposed to do. NEP has been put forward by the government of India. Sir has given you, everyone has given you. But I can tell you, Indian system is best. Sir has told us Indian system is best. आप उठा के देखिए रामायण, विश्वामित्र जी राम और लक्ष्मण को लेके चले गए थे शिक्षा देने के लिए. गुरु शिष्य परंपरा टॉक अबाउट द लास्ट थिंग, क्रिएटिविटी. हम बैठ के उसको रियाज करवाते हैं, क्रिएटिविटी की लास्ट एपिटम पे ले आके उसको छोड़ते हैं, देन ही बिकम्स अ मैस्ट्रो. एवरी गुरु शिष्य परंपरा जो हमारे इंडिया के अंदर थी, दैट टॉक्स अबाउट टू मेक यू पीपल मैस्ट्रो. एंड देयर आज भी बहुत सारे घराने हैं जो कि इसी सिस्टम पे, इसी पद्धति पे चल रहे हैं. लेकिन हमारा जो लॉर्ड मैकॉले सिस्टम है, दिस इज लॉर्ड मैकॉले सिस्टम विच वी आर डूइंग ओवर हियर, विच इज़ गिवन बाय द ब्रिटिशर्स. And they have systematically changed the concept of creativity to more towards degrees and to make them more clerk oriented system. So they don't want clerk to analyze, they don't want clerks to create,
So stop the creativity at first second, how, then why, but that's it. And then the understanding and applying of that part remains with the white people. So in the Bloom's taxonomy, when we work on those things systematically, out of 6 steps, 2 steps has been discarded. 1. Now what you are supposed to do? सर ने भी बोला ब्लेंडेड लर्निंग. हम जो क्लासरूम में पढ़ाते हैं आपको, इट्स अ वन वे ट्रैफिक. क्लास में हमने बोला, टीचर ने बोला, आपने सुना. दिस इज वन वे ट्रैफिक. दिस इज आउटगोन सिस्टम. इट हैज बीन गॉन with the wind. Now we have to take up a different approach. One, sir has told you, blended learning. Blended learning is this. You have got experts over here. You have got a senior person from IP University. You have got a person from the IP Delhi University who is going to give you understanding on the system. So this is known as, and your professors and your teachers. Means on a given topic you are having 3 to 5 different approaches coming out to you. This is known as blended learning. Okay? Second one is known as flipped classroom. There is a second approach we are going to introduce. We have introduced this thing, sir. In the classroom is the flipped classroom. Flipped classroom kya hai? Flipped classroom means a teacher is going to become a mentor, mentee, and mentee is going to become a teacher, a mentor. Other way around. Why done so? Because as a mentee, you are not going to give the mentor enough challenge questions sometimes because of your own imagination, because of your own thought process, because of your lack of wisdom. But once a mentor become a mentee and you become a mentor in the class, then the teacher will ask certain questions to you which is going to inspire your imagination. So when actually these things NEP, it's all become futile if we are not going to practice this in the classroom. So for that thing, apart from pedagogy system, flipped classroom and blending learning is an integral part of system. This is I want to add. If anybody can add further things to that. सर ने मैकाले के बारे में बात करी. आप सब ने मैकाले के बारे में यदि पढ़ा, सुना या कहीं भी देखा होगा, तो आपने ये पाया होगा कि मैकाले 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 की क्या बात होती है. लेकिन हमारा रिक्वेस्ट आप सभी से है कि आप लोग मैकाले को ज़रूर समझें और पढ़ें और देखें, और मैकाले के टाइम के पीरियड को या जो टाइम था उनका, वो उसके बारे में समझने की कोशिश करें. जो मैं पढ़ पाया, देख पाया, समझ पाया, तो मैं आपको उसके अनुभव को साझा करना चाहूँगा. आपको सभी पता है कि जब ब्रिटिशर्स थे हमारे यहाँ, ईस्ट इंडिया कंपनी का एक तरह से रूल था, तो वहाँ पे बहुत सारे चीज़ों के बारे में डिस्कशन होता था कि भारत को कैसे भी हम अपने कंट्रोल में करें या अपने एथिकल स्टैंडर्ड्स को, अपने कल्चर को कैसे हम उनको मतलब भारतीय लोगों को कैसे हम एडॉप्ट कराएं, कैसे हम ब्रिटिश के रूल्स में, ब्रिटिशर्स के आइडियोलॉजी के साथ, उनकी कल्चर के साथ, उनके कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ हमारी कल्चर को कैसे एडॉप्ट करें, कैसे उसको छोड़ें या कैसे जोड़ें. तो मैकाले कोई विद्वान नहीं था, मैकाले कोई बहुत बड़ा एजुकेशनिस्ट भी नहीं था. ये बात आपको सबको जाननी चाहिए, और इस बात को आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, किताबों में पढ़ सकते हैं कि मैकाले एक लॉयर था. मैकाले एक लीगल एडवाइज़र था ईस्ट इंडिया कंपनी का, और ईस्ट इंडिया कंपनी का लीगल एडवाइज़र के रूप में जो उसने लेटर्स भेजते थे ईस्ट इंडिया कंपनी को, इंडिया से लंदन में उनकी ऑफिस में, या लंदन से इंडिया में जो ऑफिस आती थी, डाक आती थी या मैसेजेस आते थे, तो उसको यदि आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको साफ साफ लिखा गया है कि भारतवर्ष में जो भारतवर्ष की शिक्षा व्यवस्था है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी, बहुत ही ज़्यादा मजबूत थी. और इस बात को देखने के लिए उस समय 18वीं शताब्दी की मैं जब बात कर रहा हूँ, ईस्ट इंडिया कंपनी की बात कर रहा हूँ, तो उस समय का डेटा आप देखिए, कितने लोग लिटरेट थे इंडिया में. मैं आपको जान के आश्चर्य होगा कि आज 2022 में हमारे देश में जितनी लिटरेसी है उससे कहीं कम उस समय नहीं थी. आपको फिर से मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि जिस लिटरेसी का मतलब, जिस लिटरेट का मतलब आप समझ रहे हैं, वह लिटरेसी और लिटरेट होना नहीं था. उस जमाने में 18वीं शताब्दी में, 17वीं शताब्दी में ज़्यादातर गाँव में गुरुकुल जैसी एक कॉन्सेप्ट थी, गुरुकुल की शिक्षा थी.
गुरुकुल की शिक्षा से सभी व्यक्ति, परिवार के लोग शिक्षित होते थे, ज़्यादातर लोग। लेकिन जब ये मैकाले की व्यवस्था आई, लीगल एडवाइजर के रूप में उन्होंने एडवाइस किया भारतीय उसके ईस्ट इंडिया कंपनी को, तो उन्होंने कहा कि भारत की शिक्षा व्यवस्था या भारत की संस्कृति या भारत की व्यवस्था को तब तक हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, तब तक हम लीड नहीं कर पाएंगे, जब तक इसकी शिक्षा व्यवस्था को कहीं न कहीं आमूल चूल परिवर्तन करने की आवश्यकता है। तो उन्होंने उस समय एक एक्ट ले आया, उस एजुकेशन का एक एक्ट हुआ, और उस एजुकेशन की एक्ट में पैरामीटर्स कुछ उन्होंने डाले। उस पैरामीटर्स, उस पूरे एक्ट के द्वारा ये इस तरीके की बात की गई कि ये गुरुकुल नहीं चलेगा, गुरुकुल पूरी तरीके से बैन होगा, किसी भी गांव में, किसी भी ब्लॉक में, किसी भी डिस्ट्रिक्ट में इस तरह की गुरुकुल की चीज़ें खत्म होंगी। और अब क्या होगा पढ़ाई का स्टैंडर्ड? तो पढ़ाई का स्टैंडर्ड होगा एक स्कूल जैसा कुछ कॉन्सेप्ट आएगा। उस स्कूल का कॉन्सेप्ट कैसे आएगा? तो उसमें बहुत सारी चीज़ों को उन्होंने कहा कि इस तरीके से होगा, 1 2 3 4 5 6, उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को डाला, जिसमें उन्होंने एजुकेशन सिस्टम को भी डाला। उसमें कहा कि केवल एलीट क्लास के लोग आएंगे इसमें पढ़ने के लिए। बात मेरी ध्यान से सुनिएगा, एलीट क्लास के लोग उस समय के स्कूल में पढ़ने जा सकते थे, लेकिन जो गुरुकुल की व्यवस्था थी उसमें कोई भी जा सकता था। बात ध्यान से समझिएगा कि दोनों के बीच में अंतर क्या आया। तो जो हमारे समाज का जो एक तरीके से एक सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस जिसकी कमज़ोर थी, वे उस कॉलेज में या उस स्कूल में नहीं एडमिशन ले पाता था। और इस तरीके की उन्होंने चीज़ें करी कि जो हमारे समाज के बीच की जो एक दूरी है, एक गरीबी की और अमीरी की, उसके बीच में वो गैप लगातार बढ़ता चला गया। और इसका खामियाजा ये हुआ कि हम अपनी भारतीय संस्कृति, भारतीय शिक्षा से पीछे होते गए और नई चीज़ों को हमने एडॉप्ट करना शुरू किया। नई चीज़ों को प्रोग्रेसिव होना कोई गलत नहीं है, नई चीज़ों को एडॉप्ट होना कोई गलत नहीं है। कभी भी डिजिटल एजुकेशन को एडॉप्ट करना, इंक्लूड करना, एक्नॉलेज करना कहीं से गलत बात नहीं है। लेकिन हमें एजुकेशन की जब बात हम करते हैं तो हमें वो भी ध्यान देना होगा कि ऐसा कौन सा गुरु हमारे समाज को मिले जो हर व्यक्ति को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए। गुरु या शिक्षक का मतलब क्या है? मेंटर या मेंटी का मतलब क्या है? मेंटर का मतलब होता है कि आपको प्रॉपर गाइड कर सके। एजुकेशन का मतलब क्या है? जो आपको मुक्त कर सके, आपको सामाजिक बंधन से मुक्त कर सके और इस तरह की समझ डेवलप करे कि आप अपने रोजगार के साधन स्वयं से ढूंढ सकते हैं, आप अपने सिस्टम से, आप अपनी व्यवस्था से रोजगार को खुद दे सकते हैं। इस तरह की व्यवस्था जब तक आपकी नहीं आएगी तब तक आप विद्या का जो अर्थ है, विमुक्त होना, तब तक आप नहीं कर पाएंगे। और यही प्रॉब्लम हुई कि हमने एजुकेशन को रोजगार के साथ जोड़ दिया। आज हर व्यक्ति से क्लास में हम जाएंगे या आप जाएंगे और पूछेंगे कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, तो आप कहेंगे नौकरी पाना। आप क्या कहेंगे? रोजगार पाना। तो जब आपका नौकरी और रोजगार शिक्षा का अंतिम उद्देश्य होगा तो आप शिक्षित नहीं बनेंगे, और जब आप शिक्षित नहीं बनेंगे तो जो शिक्षा का मूल उद्देश्य है उसकी जो एक अंधकार से प्रकाश की ओर जाना, जिससे कि आप अपने ज्ञान को अविमुक्त कर सकें, विमुक्त कर सकें और इस प्रकाश की ओर बढ़ें, जो प्रकाश आपके जीवन को तो आलोकित करे ही करे, समाज के जीवन को आलोकित करे, सामाजिक जीवन को आलोकित करे। और तभी यह संभव हो पाएगा कि आपके ज्ञान और प्रकाश से राष्ट्र प्रकाशित हो पाएगा। तो इस तरह की भावना विकसित करिए। आपको पता है कि मोर देन 1000, मैं फिर से रिपीट करता हूं, मोर देन 1000 ऐसा विषय है जिसमें भारत विश्व का नंबर 1 है। आपको पता है? नहीं पता है। क्यों नहीं पता है? क्योंकि आपको ये बार बार ये बताई जाती है, बार बार कही जाती है कि हम शिक्षा में बहुत पिछड़े हैं, हमारा देश बहुत पिछड़ा है। जब आप जर्मनी, अमेरिका में जाते हो तो कहते हैं कि तो भारत सपेरों वाला देश है। मैं इस बात को, मैं थोड़ा सा सेंटिमेंटल हो सकता हूँ कि मुझे लग रहा है कि मैं होता जा रहा हूँ आपके बीच में कहते हुए, क्योंकि आप पूछ लीजिए, प्रोफेसर बघेल बैठे हैं,
या मैं बैठा हूं जो कि देश की कितनी 25-30 कंट्री जो टॉप की कंट्रीज हैं, डेवलप्ड कंट्री जिसको आप कहते हैं, जिसको आप मानक मानते हैं कि वो विकसित राष्ट्र हैं, वहाँ का एजुकेशन सिस्टम बहुत बढ़िया है। मैं उनके बारे में बताता हूँ कि वे आपके बारे में क्या राय रखते हैं। वो अभी भी कहते हैं कि सपेरों वाला देश है, आप अनकल्चर्ड हो, जबकि आपका कल्चर ये था, आपकी शिक्षा और संस्कृति इस तरीके की थी कि उस नालंदा की लाइब्रेरी कुछ जिस समय उस समय के आक्रमणकारियों ने जलाया था, तो कई साल लगे थे उसको बुझने में। आपको पता है इसमें कितने युवाओं को पता है कि हमारी भारतीय शिक्षा संस्कृति कितनी रिच रही है, और आज भी मोर देन थाउजेंड्स ऐसे लिस्ट हैं जिसमें हम इंडिया जो भारतवर्ष है वो विश्व को लीड करता है, विश्व को ज्ञान देता है, विश्व को शिक्षित करता है, और हम नंबर 1 हैं उस सिस्टम में। आपको पता है हमारे देश की रेलवे लाइन विश्व के सबसे ज्यादा लंबाई में रेलवे लाइन है, ये आपको पता है। दूसरी बात, भारतवर्ष में जितने पोस्ट ऑफिस हैं, पोस्ट के जो सेंटर्स हैं, वो वर्ल्ड में सबसे ज्यादा हैं, आपको पता है। सबसे ज्यादा रोडवेज का नेटवर्क, रोड का नेटवर्क विश्व में सबसे ज्यादा कहां है? भारतवर्ष में है। आप इस तरीके की जब लिस्ट बनाओगे तो आपको अपने देश पे गर्व होगा, आपको अपनी शिक्षकों पे गर्व होगा, आपको अपनी शिक्षा पे गर्व होगा, और आप अपनी भारतीय संस्कृति और शिक्षा से जुड़ेंगे। भारतीय शिक्षा, भारतीय संस्कृति हमेशा से व्यक्ति को जोड़ने की बात करती है। भारतीय शिक्षा और संस्कृति सबको एक साथ चलने की बात करती है। हम कभी भी किसी को पीछे नहीं रखते। और जहाँ तक हम बात करें शिक्षा की, तो भारतीय शिक्षा और संस्कृति में स्वाध्याय की बात की जाती है। एकलव्य ने जो ज्ञान प्राप्त किया वह स्वाध्याय था। क्लासरूम टीचिंग ओनली एंड लास्ट ऑप्शन नहीं होनी चाहिए आपके लिए। स्वाध्याय, अपने से अध्ययन अध्यापन आप करेंगे, जो डिजिटल एजुकेशन कहता है, जो भारतीय शिक्षा नीति 2020 कहती है, जब आप इसको समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि भारतीय शिक्षा, भारतीय संस्कृति देश में सभी व्यक्ति के लिए क्यों जरूरी है। क्योंकि भारतीय शिक्षा व्यवस्था, भारतीय शिक्षा नीति 2020 में ये साफ साफ कहा गया है कि एजुकेशन के लिए कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, आर्थिक सामाजिक विभिन्नता नहीं होनी चाहिए, महिला पुरुष का या थर्ड जेंडर का कोई विभेद नहीं होना चाहिए एजुकेशन को रिसीव करने में। क्या आपको पता है ये बात? आपके साथ आपके पड़ोस का रहने वाला बच्चा यदि वो गरीब है तो अच्छी शिक्षा प्राप्त न करे, ऐसा आप चाहते हैं क्या? कौन चाहता है इसमें? आप इसमें से कौन सा स्टूडेंट ऐसा चाहता है कि उसकी बहन पढ़ाई करने न जाए, या 10+2 के बाद ग्रेजुएशन नहीं करे, या ग्रेजुएशन के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन न करे, या पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद पीएचडी न करे? एक बच्चा हाथ उठाए, या कोई बच्चा हाथ उठाए जो ये मेरी बात का समर्थन करता हो। तो नो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन इन एजुकेशन, एजुकेशन टू ऑल, क्वालिटी एजुकेशन टू एवरीवन का जो गोल है, जो संयुक्त राष्ट्र शिक्षा सतत, जो मिलेनियम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की बात करता है, क्वालिटी एजुकेशन, उसको फुलफिल करता है कौन? भारतीय शिक्षा नीति 2020, जो आपके कॉन्सेप्ट का, आज के सेमिनार का कॉन्सेप्ट था एनईपी 2020। तो आप सोचो कि जिस ह्यूमन वैल्यूज की बात हो रही है वो तो ऑलरेडी हमारी भारतीय शिक्षा संस्कृति और समाज की व्यवस्था थी। ये तो मैकाले की व्यवस्था थी कि जिस मैकाले ने जेंडर डिस्क्रिमिनेशन किया, जिसने सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस पर डिस्क्रिमिनेशन किया, ये आपको समझना होगा। तो आप अपनी हिंदी भाषा पे, स्वभाषा पे, राष्ट्रभाषा पे गर्व करिए, और ये दिन दूर नहीं है जब आप पाएंगे कि आज गूगल जैसे लोग हिंदी में, संस्कृत में और भारत की बहुत सारी क्षेत्रीय भाषाओं में अपनी सर्च इंजन को एक्टिवेट कर चुके हैं। तो फिर वो समय, आप क्यों समझते हैं कि इंग्लिश बहुत प्रोमिनेंट है और इंग्लिश के बिना आप लीड नहीं कर सकते? कनाडा में जाना है, फ्रेंच जानते हैं, सर्विस मिल जाएगी, नौकरी मिल जाएगी। कनाडा में जाना चाहते हैं, पंजाबी आती है, आपको नौकरी मिल जाएगी, इंग्लिश जानना जरूरी नहीं है।
मतलब मैं एयरपोर्ट की बात कर रहा हूँ, मुझे एयरपोर्ट पे एक सिख मिले मुझे वहाँ पे सिक्योरिटी चेक में। आप बात करिए वर्ल्ड में टॉप 10 कंट्रीज की बात करिए, सिंगापुर की बात करिए, आप साउथ कोरिया सियोल के बारे में बात करिए, कहीं भी बात करिए, तो आपको स्वभाषा, राष्ट्रभाषा और हिंदी भाषा और अपनी मातृभाषा पे अभिमान होना चाहिए और अभिमान करना चाहिए, और तभी आप भारत को विश्व गुरु बना पाएंगे। और नॉलेज इकोनॉमी के रूप में आप यू कैन एस्टैब्लिश योर नॉलेज, योर कंट्री एज ए नॉलेज इकोनॉमी, कैपिटल ऑफ द नॉलेज इकोनॉमी आई कैन से। थैंक यू। थैंक यू सर। हम आज इस नेशनल कॉन्फ्रेंस की संगोष्ठी से एक चीज़ घर लेके जाएं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, कितने लोग अपने माता पिता के सुबह उठ के चरण स्पर्श करते हैं? वेरी नाइस। जो कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, और जो नहीं कर रहे हैं प्लीज़ एक बार करके देखिए। जो नहीं कर रहे हैं वो प्लीज़ करके देखिए, और देन यू विल सी द ट्रांसफॉर्मेशन। ये आपके जो माता पिता हैं, जो आपके प्रति एक अपना भाव रखते हैं, बिकॉज मदर इज़ द फर्स्ट टीचर ऑफ योर्स। अब पहला टीचर जिसने आपको कदम से चलना सिखाया, हम उसका आभार नहीं प्रकट कर सकते तो हमसे बेगैरत कोई हो नहीं सकता। मैं चाहूँगा आप बार बार अपनी मदर को जरूर प्रणाम कर दिए, सोते वक्त जागते हुए उसको मम्मा मदर आई लव यू, और सुबह उठते हुए उनके चरण स्पर्श करिए। आप देखेंगे आपके घर में पॉजिटिविटी बिखरेगी। दिस इज़ द ह्यूमन वैल्यूज। प्लीज़ टेक दिस फ्रॉम हेयर। कलकत्ता में एक बिल्डिंग है लाल रंग की, बहुत बड़ी बिल्डिंग। उस बिल्डिंग का नाम है राइटर्स बिल्डिंग। You can simply link it with the Macculars that we are talking about. They simply had to produce the person maximum to level of the writers, not more than that. Thanks. If anyone any questions you are having? My question to Durgesh sir. We are talking about online and massive classes, MOOC classes, and SWAM classes, and lots of the online classes introducing, even universities has introducing the online courses, degree courses. But still, from the last 1 or 2 months, or आने वाले समय में भी, it's the tariff rates of the internet is high and higher, increasing it again and again. Then the second thing is the connectivity. अभी भी गांव खेड़ों में जहां वहां भी इंटरनेट की कनेक्टिविटी नहीं है, तो हाउ न्यू एजुकेशन पॉलिसी वी कैन। ये बहुत सिंपल सी बात है। आप अभी 4G सब एक्सपीरियंस कर रहे होंगे दिल्ली में। आप सब लोगों के पास जो कनेक्शन है 4G का है। 5G के बारे में आप सुन रहे होंगे। 5G के बारे में अभी थोड़े दिन पहले, 10-15 दिन पहले, मुझे याद आ रहा है कि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस बारे में कहा कि जल्दी ही 5G आने वाला है। मैं कह सकता हूं कि मैं इस हॉल में, हो सकता हूं मैं एकमात्र या मैं पहला व्यक्ति होऊंगा जो मैंने 2019 में लंदन के हिथ्रो एयरपोर्ट पे 5G एक्सपीरियंस कर चुका हूं, नंबर 1। और जब मैंने 5G एक्सपीरियंस किया था वहाँ पे, और वो बहुत ओपन वाईफाई था जैसे एयरपोर्ट पे होता है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि आने वाले समय में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। दूसरी बात, जहाँ तक कनेक्टिविटी की बात है, और उन्होंने गाँव से जोड़ के बात करी केशव जी ने, मैं उस पर भी बात को फोकस करूँगा। आपको पता है 10 साल पहले या 20 साल पहले कितने गाँवों में इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन नहीं था? कोई बता पाएगा इसमें? आज भारतवर्ष के लगभग, मैं लगभग अभी कह रहा हूं क्योंकि मेरे पास एग्जैक्ट डेटा नहीं है, बट मैं कह सकता हूं कि मोर देन 90%, मोर देन 95% गांवों में बिजली के कनेक्शंस हैं। तो आप ये समझ सकते हैं कि आने वाले समय में न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 को एडॉप्ट एंड एक्नॉलेज करने में, और डिजिटल एजुकेशन को एक्नॉलेज करने में, एडॉप्ट करने में, वाईफाई या कनेक्टिविटी की स्पीड कहीं से भी कंस्ट्रेन नहीं होगा, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। Thanks a lot to all the students, all the faculty, and our guest, chief guest.